Assalamu alaikum students. Today we have to start worksheet number 33. We have discussed about the properties and everything of circle and tangent. So now according to the same properties, we have to complete this worksheet number 33. So the worksheet number 33 is in this diagram, we have to calculate ABD, angle ABD. So which angle is this? Angle ABD is this angle. We have to calculate this angle. How to calculate this angle? Check करते हैं जनाब. If from CD it is 65 at A, then this is also 65. And from AB chord, if this angle C is 41, then from AB, this angle is also 41. And it is a cyclic quadrilateral. And sum of the opposite side of cyclic quadrilateral, opposite angles, is equal to 180 degrees. So we can say that, let's say this is X equals to 180 minus 65 minus 41 minus 27. By this, we'll get the value of X, which will be 47. The value of X is 47. Hopefully it is clear. Now the next question number 2. Basically, this worksheet is mostly, we'll see the question about cyclic quadrilateral. Now, in this question, we have to calculate PQR, this angle, PQR, and ORS, this angle. How to calculate? Check करते हैं जनाब. बच्चों, from center of the circle, OP is radius, OR is radius. So this angle is of 40. According to this, 40 and 40. अगर हम 180 में से 40 and 40 subtract करते हैं, so this angle is of 100. And this angle is of 80. Here again, OS is radius. So we can say that this is X and this is X. So X plus 80 equals to 180. What is the value of X? The value of X is 50. This is 50. And this is 50. According to cyclic quadrilateral, P, Q, R, S, all 4 vertices are on the circumference of the circle. So sum of opposite angles, S plus Q equals to 180. So angle Q or angle PQR is equal to 180 minus S. So 180 minus 50 is 130. Now the next question is, we have to calculate angle ACB, this angle. Angle ACB हमें calculate करना है. अब देखिए, अगर सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन करते हैं C तक, तो बच्चों these 3 are radii. So this is 20, so this is also 20. And if this is 30, then this is also 30. So the complete angle is 50. The complete angle is 50. Next, question number 4. We have to calculate angle BAD, this angle, and angle XCD, this angle. Calculate करते हैं जनाब. In a big triangle ABX, we have 80, we have 30, we are able to calculate angle A. So angle A plus 80 plus 30 equals to 180. Angle A equals to 70.
this angle is equal to 70. If this is 70, then opposite angle will be 180 minus 70. So it will be 110, and 110 minus 180 will be 70. Both angles are here, and both angles are of same size. Question number 5. A diagram is given. We have to calculate angle POT. POT. This will be PQT. This will be PQT, as there is no O in the diagram. So PQT, this angle, and RQS, this angle. ये दो एंगल्स हमें चाहिए. करते हैं वर्किंग. From PQ chord, first angle S is 20 degrees. From PQ chord, second angle T will also be 20. Now, in the big triangle, we have angle P, we have angle T. Angle R हम calculate कर सकते हैं. 180 minus 100 minus 15 plus 20 is 35. So it will be angle R is 45. Angle R is 45. This angle is of 45. अगर ये angle 45 का आ गया, अब मजीद वर्किंग करते हैं जनाब इसमें. अब आप देखिए बच्चों, PQST, PQST is a cyclic quadrilateral. The opposite angles, angle Q plus T equals to 180. So what is angle Q? It will be 180 minus 35. So it will be 145. And what is this Q angle? ये जो Q angle आया, this will be PQS. The angle PQS, complete angle PQS. ये पूरा angle यहाँ तक आया. This angle. अब अगर हमें angle RQS calculate करना है, तो क्या हो जाएगा? 180 minus PQS, and PQS is 145. So RQS will be 35, because PQR straight line है और हमारे पास PQS का एंगल है. रिमेनिंग एंगल 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है. तो ना अब आप देखिए, अच्छा इसमें डायग्राम को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है. अब आप एक ट्राइंगल देखिए. विच ट्राइंगल? ट्राइंगल TQR. ट्राइंगल TQR, दिस ट्राइंगल. अब आप देखिए इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज ऑफ 45 and this angle is of 15, this 15, this 45. तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं. We are able to calculate this angle. And what is this angle? And what is this angle? ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं. How to calculate this angle? 180 minus 15 minus 45. 180 minus 15 minus 45. The angle will be 120. And what is this angle? The angle TQR. अब आप देखिए हमें कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल. वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल. हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है. अगर मैं कहूं ये एक स्ट्रेट लाइन है, यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ये वाला एंगल मौजूद है. कितना? 120 का. तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 180. Therefore final angle PQT is 180 minus 120. The final angle is of 60 degrees. Hopefully it is clear. मजीद आगे चलते हैं. Again, what we have in this question, we have to calculate the sum of PQR
we have to calculate the sum of PQR. Let's say this is X. But okay, XQ. If PR is the diameter, then this is 90 degrees. PQR तो आ गया. इसका सम किससे? PRS and PTS से. PRS, let's say this is X, and PTS, let's say this is Y. अब आप देखिए, it is a cyclic quadrilateral. PRST. तो opposite angles का सम कितना हो जाएगा? 180. और ये 90 हुआ, तो 180 plus 90, the result is 270. The result is 270. Complete sum of the three angles. Mazid aayi. Question number 7. In the diagram, BAD is 90. Find the radius of the circle. We have to calculate the radius of the circle. Let's say the radius of the circle. Let's say this is the radius of the circle. अगर हम इसको extend कर दें, तो it is a diameter. By using Pythagoras theorem, hypotenuse square, BD square equals to base square plus perpendicular square. So, what is the length BD? The length BD is 10. And what is radius of the circle? It will be 10 divided by 2, 5. The complete diameter is of 10 and the radius will be of 5. Now, worksheet number 34. In the diagram, O is the center of the circle, given that KOL is 110 and LMN is 85. Find OKN. Find OKN. We have to calculate this angle. We have to calculate this angle OKN. करते हैं जनाब calculate. बच्चों, if this is 110, here radius, can I say that this is X? So this is also X. Yes. So can I say that X plus 110 equals to 180? What will be the value of X? 180 minus 110 divided by 2. It is 35. ये 35 हुआ. It is a cyclic quadrilateral, opposite angles K plus M equals to 180. What will be, let's say this is Y. K is Y plus 35 plus 85. M equals to 180. What is the value of Y? It will be 180 minus 85 minus 35. The value of Y is of 60 degrees. Next question. Question number 2. A diagram is here. We have to calculate BAD, angle BAD, this angle. We have to calculate this angle. अब सुनिएगा. बच्चों, here is an isosceles triangle. CD and D, the both are same. एक चीज तो ये हमें नजर आ रही है, दूसरी चीज AC, O is the center of the circle, so AC is the diameter. So this angle is of 90 degrees. If this is 90 degrees, then opposite angle, this is also 90 degrees. If this is 90, then this is also 90. And according to the diagram, it's an isosceles triangle. These are 45, 45, because if this one is 90, then these two angles are half of 90. So 45 and 45. We have to calculate angle BAD. So if I'll calculate this angle, 180 minus 45, it is 135. And it is opposite to the required angle. So 135, 180 minus 135, the result is 45 degrees. Question number 3. We have to calculate angle EDG, this angle EDG, and angle DEF, this angle. हमें ये दो angles calculate करना है.
करते हैं जनाब कैलकुलेट किस तरीके से हो सकते हैं। जी एफ इज द डायमीटर, जी एफ इज द डायमीटर। अगर मैं एक लाइन को एक्सटेंड करवाऊं यहां से और आपको बताया गया जी एफ इज द डायमीटर, देन दिस इज 90 डिग्रीज। इफ दिस वन इज 90 डिग्रीज, so the angle, this angle is of 55, and 180 minus 55, this angle is of 125. EDGH is cyclic quadrilateral. So this and this sum equals to 180. So therefore it will be 180 minus angle E is 180 minus 125. So it will be 55 angle DEF. And now we have to calculate angle EDG. We have to calculate angle EDG. ये वाला एंगल अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों. This is 90 degrees. If this is 90, then opposite angle is also equal to 90 degrees. Because sum of opposite angles क्या होता है जनाब? 180 degrees. Question number 4. Here is a diagram. Two circles are here. Calculate QPS. Calculate QPS. ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है. कैसे होगा? अगर मैं कहूं 110 minus 180 तो ये एंगल आ जाएगा. It will be 70. It will be 70. बल्कि इसकी जरूरत नहीं है हमें. Another method, 360 minus 110. 360 minus 110, it is 250. And half of 250 is this angle. Because center में जो एंगल होता है उसका हाफ, सर्कमफेरेंस में जो एंगल होता है, सॉरी, सेंटर में जो एंगल होता है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पर होगा. हम फोकस कर रहे हैं बड़े वाले सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को हम फोकस नहीं कर रहे हैं. सो 250 डिवाइडेड बाय 2 इज 125. और अब आप देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर बन रहा है. ओ के ऑपोजिट पर पी है, तो पी कितना हो गया? 180 माइनस 125. सो इट विल बी 55 डिग्रीज. रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. बच्चों ये जो एरोज लगे हुए हैं लाइंस पर, दीज एरोज, इसका मतलब क्या है? लाइंस आर पैरेलल. नाउ बी एफ जी हमें कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट बी एफ जी, दिस एंगल, एंड ई बी ओ दिस एंगल. ये दो एंगल्स हमें कैलकुलेट करना है. करते हैं जनाब. इफ दिस इज 120, then this angle will be 360 minus 120. So it will be 240, and half of 240 is 120. तो ये एंगल हो गया 120. If this is 120, then minus 180. This angle is of 60 degrees. According to Z formation, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा. 60 का opposite, it is, if this angle is of 60 BFG, then FBO angle is also equals to 60. जो दरमियान में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ओ बी एफ ए, इसके देखें सेंटर वाले ऑपोजिट एंगल सेम हो गए 120, तो ये वाले भी सेम हो जाएंगे. ये एंगल कितना? यहां तक 60 हो गया, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना रह गया? ये रह गया 80 माइनस 60, ये रह गया 20. दिस इज 20. अगर ये एंगल हमारे पास 120 है सेंटर ऑफ द सर्कल में, तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा? ये दिस एंगल इज ऑफ 60. अब आप देखिए ए ई बी
Oh, it's a quadrilateral and sum of all angles in a quadrilateral equals to 360. So if this is x, so we can say that x plus 60 plus 20 plus 240 equals to 360. So the final answer is x is 40. Now, question number 6. We have to calculate PSW, PSW this angle, PWR this angle, SPW and this angle. करते हैं वर्किंग बच्चों. इफ फ्रॉम एस आर से एक एंगल बना 26 का, तो एस आर से ही एक और एंगल जो बनेगा वो भी क्या होगा, 26 का होगा. नाउ अब आप देखें, अकॉर्डिंग टू पी आर सर्कमफ्रेंस का एंगल 116 बन रहा है, तो सेंटर में क्या बन जाएगा इसका ट्वाइस, 232 का एंगल. ये एंगल कितना हो गया, 232 का एंगल हो गया. कितना हो गया जनाब, 232 का हो गया. अब 360 से माइनस कर दें तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 128. अब सुनिए, ये 26 है, ये रेडियस, तो ये रेडियस की वजह से ये भी 26 हो गया. बट और ये भी 26 हो गया अकॉर्डिंग टू द रेडियाई. अब रह गए जनाब ये दो एंगल्स, जो दो आपको दिस वन एंड दिस वन, ये दो एंगल्स रह गए. अब इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा चेक करते हैं. हमें देखें इसकी नीड नहीं हुई, तो ये हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर ली थी, हमने इसको रिमूव कर दिया. अगर नीड होगी तो हम फिर लिख लेंगे. अगर हम सिर्फ ये वाला एंगल निकालना चाहें, विच वन, ये वाला एंगल, दिस वन, तो क्या हो जाएगा, 26 प्लस एक्स इक्वल टू 180. एक्स आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 26 माइनस 26, एक्स कितना आ गया 128. स्ट्रेट लाइन अगर आती है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 128, इट विल बी 52. ये 52 है. लेट्स से दिस इज एक्स, लेट्स से दिस इज एक्स, x प्लस 52 इक्वल्स टू 0. x कितना आया, 180 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2, 64. दोनों सेम है तो दोनों ही एंगल्स 64 डिग्रीज के हो गए. होपफुली इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7. इन द डायग्राम फाइंड BAC. फाइंड BAC. कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है. BAC वी हैव टू कैलकुलेट दिस. ये भी सर्कल के अंदर है डायग्राम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ध्यान में रखिएगा. तो ये 70 है तो सामने वाला क्या हो गया, 110. 110 और 40 से 180 माइनस 40 माइनस 110, 30 डिग्रीज का ये एंगल रहेगा. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ द वर्कशीट कंप्लीट. इंशाल्लाह वर्कशीट नंबर 35 will do in the next class. Allah Hafiz.